produce a resultant force of 10 newtons? How it is possible to produce a force of 10 newtons from two forces of 5 newtons? So the two 5 Newton forces would be, jaldi batao beta. They would be in the same direction, so they could add up, and then they can be like 10 Very good. of 5. In the space below, draw a vector diagram to show how a resultant force about, okay. अच्छा, अब ये वाली चीज जो है ना, ये वेक्टर एडिशन में अभी तुम लोगों को मैंने सिखानी है। वेक्टर एडिशन में ये इस पे, ठीक, ऑलराइट, मुझे रिमाइंड कराना। 9 मिनट्स में दिस क्लास माइट एंड, और आप लोग फिर रिजॉइन कर लेना, ठीक है। यू गॉट दिस बेटा, ये वाला पार्ट हमने आगे करना है। इसके लिए अभी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाना है जो कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। सो जस्ट लीव दिस फॉर वेक्टर एडिशन, इसके ऊपर वेक्टर एडिशन लिख दो। दिस वाज पेज, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि पेज मिस ना हो बाद में क्वेश्चन। पेज कौन सा था ये? 100, 1. ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। shows that car traveling at 30 meters per second on a level road. At this speed, the car has to overcome a total force of 600 newtons opposing the car. So 600 newtons is opposing the car. Driving force is to the right. Calculate the distance traveled by the car in 10 seconds. You know the speed. You know the speed. You know the opposing force. You need to find the distance. Distance कैसे निकालते हैं भाई? Speed is equals to distance upon time. S- Distance is equals to yeah, speed into time speed multiplied by time. by time. So distance is equals to speed कितनी है बेटा? 30. Time कितना है? 10. Hmm? Yes or no? State the value of the driving force produced by the engine for a steady speed. इसको highlight करो बेटा, underline करो इसको, steady speed, and इसको भी highlight करो, ठीक है। और इसको भी देखो, जब आप बात करते हो ना स्टेडी स्पीड चाहिए हमें 30 मीटर्स पर सेकंड की, सो इसका मतलब फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? क्या होंगी फोर्सेस बेटा? इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आपके पास अगर मैं बात करूं 600 न्यूटन अपोजिंग फोर्स है, 30 सेकेंड्स पर जाकर वो स्टेडी स्पीड से जा रहा है। 30 सेकेंड्स के बाद, कितना, सॉरी, 10 सेकेंड्स के बाद वो 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्टेडी स्पीड से जा रहा है, राइट? सो इसका मतलब है उस वक्त क्या हो गया होगा? उस वक्त आपके पास आपकी जो फॉरवर्ड फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है और जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो क्या हो गए होंगे? इक्वल। सो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपली स्टेट करना है डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ। सो 600 न्यूटन टू द, बोलो, left. मेरा तो राइट बन रहा है। कांस्टेंट स्पीड करनी है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। Okay, okay, okay. हम्म, क्योंकि इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्टेडी स्पीड, स्टेडी मींस कांस्टेंट,
लिख लो इसके लिए, स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट। Why the car slows down when it climbs a hill even though the driving force is unchanged? ड्राइविंग फोर्स अनचेंज्ड है, कार फिर भी स्लो डाउन हो रहा है, क्यों? Well, I have two answers. There may be friction, or the gravitational force is pulling the car down. But friction, I don't think pulls it down. I think it's the gravitational force. I don't think friction can. And right now I think it's the gravitational force. the opposing force is now there, it will then be there as well, but the additional force is the The gravitational car's force. weight, I think. Additional force is the driving force, is the gravitational pull. Okay, So there's the weight of a car, I think. weight of the car, Yeah, and weight is a force, right? yeah. Yeah, the And which gravitational type of force. force is that? Gravitational force. Bas. Okay. All right. So So I can just say the gravitational force yeah, pulling it yeah, downward. yes. I'll just for Abdullah, I'll write down weight as well. Weight or gravitational force. Now, the whole weight is not used to pull it down, right? Just a component. And in fact, I'll just rephrase this. A component of weight a component of weight or gravitational force will act to oppose motion of the car. All right. इसी वजह से तो स्लो डाउन हो रहा है, मोशन अपोज होगा तो ही स्लो डाउन होगा ना, मोशन अपोज होगा तो ही स्लो डाउन होगा। बात समझ आ रही है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। While on the level road and traveling at 30 meters per second, the driving force becomes zero. Mass of the car is 800 kg. Calculate the deceleration of the car. कार की deceleration calculate करनी है। So deceleration का मतलब सीधे सीधे क्या है? Acceleration. Acceleration की वैल्यू क्या है? V minus U upon T. V minus U upon T, right? So acceleration would be equals to the driving force becomes zero, mass of the car is this, calculate the deceleration of the car. लेकिन इसने ये बोला कि it comes to a rest while on the level road and traveling at this speed, the driving force becomes zero, mass of the car is 800 kg, calculate the deceleration. Eventually it will stop, na? So final Yeah. speed क्या हो जाएगी? 0 minus 30 divided by, लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, टाइम कहाँ है? Oh, yeah. Wouldn't we use the time given above? No. Everything becomes zero with the cards. Okay. While on the level road and traveling at this speed, driving force becomes zero. Mass of the car is 800 kg. The only force acting would be the opposing force then? Huh? We know the mass, na? So the only force acting, acceleration is force upon mass. The only force acting would be the backward force, क्योंकि forward force तो zero हो जाएगी. That's 600. And what is the mass? 800 kg. So what would be the deceleration? 6 upon 8. That's 3 upon